Cost of common stocks, second part of our discussion in Module 192 of Financial Management. इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूएशन के लिए, उनकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए क्या अजम्पशंस हम यूज़ करते हैं, और हमने कॉमन स्टॉक्स के हवाले से ये बात की थी दैट देयर आर 3 बेसिक अजम्पशंस that we can have with reference to the cost calculation of common stocks. And these 3 assumptions were that the dividend will never grow, will remain constant. And we also discussed the reason of that. And the second one was that the dividend will grow, but the rate of growth will be constant. So we termed it as constant growth of dividend. And the third one was that there will be growth in dividend, but the rate of growth will not be constant. So we talked about it may be a 2-stage growth model or a 3-stage growth model, or we can extend it to any number. Now let's have a look at the first one, if there is no growth of dividend. यानी हमारा डिविडेंड बढ़ नहीं रहा, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारा डिविडेंड कांस्टेंट हो गया है. अगर पहले साल या पिछले साल कंपनी ने 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी उतना ही होगा, इससे आने वाले साल में भी उतना ही होगा, और हमेशा हमेशा 5 रुपीज़ डिविडेंड ही मिलता रहेगा. इस तरह की जो कैश फ्लो है उसको हम परपेचुटी का नाम देते हैं, और वही परपेचुटी का फॉर्मूला जो हमने प्रेफर्ड शेयर्स की वैल्यूएशन या उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया था, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. एंड हेयर द फॉर्मूला इज़ दैट द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक R is equal to the dividend on the common stock divided by the price of that common stock. So it is R is equal to D over P, where R is the cost and D is the amount of dividend which will remain constant, and P is the market price. So to calculate the cost of common stock, we have to just get the amount of dividend. Market से, उसकी annual report से आप उस डिविडेंड की अमाउंट को लीजिए और उस वक्त की मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए. Suppose if the amount of dividend is 5 and currently the stock is selling at ₹50, then the cost of this common stock, whose dividend is constant or it is not growing, will be 10%. तो ऐसे कॉमन स्टॉक के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% कंसिडर की जाएगी. आगे चलते हैं. जो दूसरा हमारे पास मॉडल है, इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का नाम भी दिया जाता है, और इसको हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं. इस पर हमने ये बात की थी कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ये बताता है कि किसी भी स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा. एंड दैट मीन्स इफ द फर्स्ट ईयर the growth rate is 10%, then in the second year the growth will again be 10%. In the third year it will still be 10%, and this growth of dividend will continue till infinity. And as a result we'll have a constant growth model. So constant growth model के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो reduced फॉर्म में हमारे सामने आता है, जैसा मैंने कहा कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है, and that is R is equal to D1 over P plus small g. यहाँ पर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो समझने की हैं, कि यहाँ पर हमने D का वर्ड या लेटर यूज़ नहीं किया बल्कि D1 यूज़ किया है. ये D1 क्या है? D1 असल में आज के बाद आने वाले साल के आखिर में जो डिविडेंड हमें मिलेगा वो डिविडेंड है जिसको हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज द डिविडेंड ऑफ ईयर 1 विच विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर. और जब हम डी नॉट की टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब है वो डिविडेंड जो पिछले साल पे हो चुका है. और इसी रेफरेंस से अगर हम D2, D3, D4 की बात करें तो these will be the dividends of year 2 and 3 and 4 and 5 and so on. So in this formula, we take the dividend of year 1
we divide it by the current market price. अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि हम D1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी ये D1 की फिगर तो वो है जो आने वाले साल में हमें मिलेगी, तो हम इसे कैसे डिटरमिन करते हैं? इसके लिए हम D0 यानी पिछले साल के डिविडेंड जो एक्चुअली हमारे पास मौजूद होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं विद द एक्सप्रेशन 1 प्लस ग्रोथ रेट. 1 plus growth rate means the growth rate of dividend, यानी 1 plus g के साथ जब हम D0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाती है. और D1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, be divided by the current market price and then add back the same percentage of growth, the small g in it, in order to get the cost of common stock, which is growing at a constant rate. In this formula, R is the cost of the common stock and D is the amount of dividend. D1 is the next year's dividend and P is the current market price and small g is the growth rate of dividend. ये growth rate भी depend करता है हमारे rate of retention के ऊपर. इस पे हमने थोड़ी सी बात की थी, जितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन करेगी उसी हिसाब से उसका अगला प्रॉफिट ग्रो करेगा. सो ग्रोथ रेट इज अ फंक्शन ऑफ रिटेंशन रेशो. जितनी रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी उतनी आने वाले सालों में ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना प्रॉफिट कंपनी रोक लेगी अगले साल उस पर मज़ीद प्रॉफिट अर्न करने से कंपनी की ग्रोथ में इजाफा होगा. Now let's see that how these calculations actually work. And here we have got the calculations of constant growth of dividend. The formula is R is equal to D1 over P plus G. If D is, let's say, not has got any value, we'll multiply it with 1 plus G. इस केस में हमने 6% ग्रोथ रेट या स्मॉल g लिया है, तो जो हम D0 को 1 प्लस 6% से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास $5.5 या रुपीस की वैल्यू आती है, तो इसको हम उसकी मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं. सपोज 5.5 is divided by 50 and the answer is added in 6%. We get the percentage or the cost of common stock whose dividend is constantly growing. So this discussion of no growth and constant growth models can be summarized in a way that in case of no growth, the formula of perpetuity is applied, which is simply R is equal to D over P. And in case of constant growth, we apply a different formula, and that formula is the Gordon's formula, which is D1 over P plus G, where D1 is the next year's dividend calculated by multiplying D0 with 1 plus G. And hence we get the percentage, which is then used as the cost of equity capital, and that can further be used to calculate the weighted average cost of capital. इस मॉड्यूल की डिस्कशन को हम यूं कंक्लूड करते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ हो या नो ग्रोथ हो, इन दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद हैं. नो ग्रोथ मॉडल पे हम R इज़ इक्वल टू D ओवर P यूज़ करते हैं जो परपेचुटी का फॉर्मूला है, और कांस्टेंट ग्रोथ के लिए हम R इज़ इक्वल टू D1 ओवर P प्लस G यूज़ करते हैं जो कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहलाता है. और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि D1 इज़ इक्वल टू D0 into 1 plus D, and hence we get that cost of common share capital, which is then used to calculate the overall weighted average cost of capital.